Hey guys, back after a long time. So why are we back? Obviously, for doing another study session with me. So what chapter are we gonna deal with today? Oh my god, it's the most important chapter. It's ecology. I have completed some part of it. The summary would be there, but let's again get back to the topic and we will be studying according to some selective topics I will be picking and moving in a backward direction. I hope that you don't mind at all. So let's start without wasting any time. So what's the topic that we are going to deal today? And obviously we have changed the scene of our study today to give you a new vibe for studying, as obviously changes gives us some kind of pace. You get it exactly. It's acceleration. So let's start without wasting much time. What's the next topic that I have to cover is about the topic why should we conserve the biodiversity? Means the biodiversity conservation topic we are going to deal now. There are many reasons, some obvious and others not so obvious. But all equally important that why should we conserve the biodiversity? So let's handle it calmly, right? So as you get to know that the reasons can be obvious and not so obvious sometimes, they can be grouped into three categories. There are narrative, utilitarian, broadly utilitarian and ethical. So the narrow utilitarian arguments for conserving the biodiversity are obvious. Human derive countless direct economic benefits from nature food. So जो पहली बात है ना कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है ना, पहला आंसर ही ह्यूमन थोड़ा सेल्फिश होकर देता है कि वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर इकोनॉमिक बजट, सो कि हमारा फ़ायदा हो. तो वही चीज़ और डायरेक्ट इकोनॉमिक बजट वाली जो चीज़ है वो नैरो यूटिलिटेरियन के अंदर आता है. यूटिलिटेरियन बिकॉज यूटिलिटी फ्रॉम द वर्ड यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना, उसे यूज़ करना. तो नैरो यूटिलिटेरियन में नैरो बाउंड होकर हम लोग क्या चीज़ करेंगे? शेल्फिश चीज़ें करेंगे, राइट? इट्स सो ऑब्वियस. सो वही डायरेक्ट इकोनॉमिक बजट ह्यूमन अपने माइंड में रखता है और वही वो पहला रीज़न देता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए. For conserving the biodiversity are obvious. Human derive countless direct economic benefits from nature food like cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. Here the drugs means the medicinal values of those plants. So those drugs, all the drugs, the 25% of the drugs come from the plants. So obviously it's helping in the direct economic budget of the humans, right? And 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native peoples around the world. And the native peoples, like we use haldi in our home. So like the 25,000 species of plants are used as the native medicines, traditional medicines by the native people. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforests waiting to be explored. With increasing resources put into the bioprospecting, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हम भी जानते हैं कितना डाइवर्स है और कितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कितनी ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स होंगी जो कि वेट कर रही होंगी यार हमें भी ढूंढ लो, हम भी तुम्हारा फ़ायदा करेंगे मेडिकली बाय गिविंग अस द इकोनॉमिक बजट, राइट? So, how many more areas are useful there are tropically related to explore with increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular genetics and species level diversity for products of economic importance. Nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. तो ये जैसे समय रिसोर्सेज इंक्रीज होते जाएंगे और इन्हें हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग में रखेंगे कि इनके एक्सप्लोर करना मॉलिकुलर लेवल, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. तो इससे क्या कहते हैं, नेशन जितना चाहे उतना फ़ायदा कर सकते हैं, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स पा कर सकते हैं. तो ये एक रीज़न है कि हर एक नेशन को साथ मिल के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. ये उनकी नेसेसिटी के साथ साथ फ़ायदे की भी बात है. Now that considering the broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many economic ecosystem services that nature provides. पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस जैसी जो
प्रोसेस होती हैं उसमें भी हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी हेल्प करती है। तो तब वही कह रहे तो ब्रॉडली यूटिलिटी आर्गुमेंट से बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. We all know that we are alive just because of the oxygen we breathe. But what if this oxygen gets decreased? Means the Amazon rainforest of the whole Earth, the 20% of the oxygen comes from the Amazon rainforest, and it's still dwindling. Dwindling means it's vanishing because people are after its resources. They're destroying the forest for their own resources, and many other things are done by the thing that provides us the oxygen to live. So can you imagine how tough it is? Can we put an economic value on this service by nature? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. So this economic benefit, this can also be taken as economic benefit, because you also remember the corona time that the oxygen cylinder, people were begging for it, a room, a bed. But now when they're okay, they're fine, they don't care about the nature, they don't care about the oxygen, they don't care about the forest. It's the human nature. Pollination, without which plants cannot give us fruits or seed, is another service ecosystem provides through pollinators layer, bees, bumblebees, birds and bats. What will the cost of accomplishing pollination without the help from natural pollinators? तो हमें ये चीज़ भी बता रही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो हमें पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। अगर सोचिए कि फ्लावर्स है, उसके अंदर वो पॉलिन ग्रेन्स आ गए हैं, पर हमारे पास पॉलिन ग्रेन्स डिस्पर्स करने के लिए एनिमल्स ही नहीं है, तो क्या हमें कुछ अपने फ्रूट्स हर सीड्स हर जगह मिल पाएंगी? क्या ये डिस्पर्जन हर जगह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दैट विल लीड टू लैकिंग ऑफ द फूड रिसोर्सेज। अनदर थिंग दैट which is so much useful for the humans to be alive. What will the cost of accomplishing? अब ये खुद सोचिए कि इन नेचुरल पॉलिनेटर्स को हटा के हमें खुद से कोई पॉलिनेशन करवाना तो कितना ज़्यादा उसमें भी पैसे लगते हैं, कितनी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पर नेचर के फ्री रिसोर्सेज की क्या है, कोई नहीं करता। They just know how to get the maximum benefits for themselves by destroying nature. I also am human, so I'm not estimating myself soon, but I'm far not done this whole thing. But yeah, at least we can do afforestation on our levels. तो ये थोड़ा हमारा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया ऑफ कंजर्विंग द नेचर, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। फॉर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वी सी इज दैट फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर पॉलिनेशन दैट इज डन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, द बायोडाइवर्सिटी that we derive from the nature, the aesthetic pleasures of walking through the thick woods, watching spring flowers in full bloom, or waking up to bulbul song in the morning. Can we put a price tag on such things? We can't put a price things on the natural resources provided by the nature for free. The ethical argument means moral values for conserving the biodiversity relates to what we owe to the millions of plants, animal and macro species with whom we share this plant. अब हमारी moral values, आखिर हम ह्यूमन हैं तो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, राइट? थोड़ी ही बहुत। हम इस अर्थ पे हैं, क्या हम अकेले रहते हैं इस अर्थ पे? नहीं, हमारे साथ रहते हैं एनिमल्स, बर्ड्स और कितनी ना जाने स्पीसीज रहती हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है बनता कि अगर वो स्पीसीज हमें चैन से रहने दे रही हैं तो क्या हम भी उन्हें चैन से रहने दें? तो दिस इज़ आवर मोरल वैल्यू, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट ओ टू देमसेल्व्स। Wait, I think I said something wrong. We must owe to them. So it's like that. So we should also care about them and conserve our biodiversity. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species that has an intrinsic value, even it may not be of current or any economic value to us, we have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in a good order. So this line is saying like this, that कि हमारे भले ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं जो हमारी लिविंग में नहीं सपोर्ट करें, पर हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम सबकी केयर करें, राइट?
we need to realize that every species has an intrinsic value. हर एक इंसेक्ट की कुछ ना कुछ intrinsic value होती है और हमें उसे रिस्पेक्ट और ओबे करना चाहिए. Even if it may not be of current or any economic value to us, we have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. तो हमें भी जैसे कि हमें अपने पिछली जनरेशन से ये सारी चीज़ें अच्छे से मिली हैं, वैसे ही हमें भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से रोकने के लिए हम जितना खुद से कर सकते हैं वो उतना करना चाहिए, एंड ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो सके और वो भी इन सब चीज़ों को देख सके, जान सके, समझ सके, और हाँ वो अपने फ़ायदे के लिए भी यूटिलाइज करे इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, तो ये था हमारा आंसर कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाई नॉट कंक्लूड इन अ शॉर्ट समरी. सो लेट्स डू इट. I don't know would it be proper to write before you guys, or I should already write it and then you would say afterwards. Well, what do you say? Okay, let's do a magic. So I have finally summed up the points that we have gone through and written it. Well, it's not visible, so let's ignore it for now. Now let's get to know about the loss of biodiversity. Let me tell you a thing. Actually, I don't know. I have my test tomorrow, but the way I'm taking the things, time to explain the things, and I'm just feeling that I am wasting time. But when the phone is in my hand, this feeling comes and vanishes soon. Why? I can't get to know what's actually the reason we lag behind. Is it the destiny that they don't want us to be successful even we have the capability? I don't know. I don't want to talk much too. But it's just that now I don't know what to do now, because I have many chapters coming up in my test, and ecology is also coming. Our respiration plants, respiration in animals, blood circulation, and chemical coordination and integration. I've done nothing. None of those chapters. I'm busy with ecology since morning, and yet it's already 7 in the evening. I have much to complete, so I really don't know what to do. I took 2 minutes now just to tell the condition, but I don't have the courage to move forward with this chapter. I don't know what kind of guilt system the human mind is built by itself. How can a person change so much? I can't get through it. So what you guys feel I must do now? Should I go on with those chapters? Because I tried. I don't want to do that. I don't feel like doing that. Or should I continue with this chapter at least? We are after all studying for NEET, right? You don't know how your test would be tomorrow. जैसा जाना चाहेगा वैसे जाएगा. You have the time. I want you to give this time to just prepare this chapter, and all questions from this chapter should be correct. Fine, get me? Because at least this chapter would be your strongest chapter for the NEET exam, because you have gone through it once very well. Because you haven't gone through this chapter very well till now.
I won't recite my name, but I usually do so. Are you sure? Should I do like this? This confusion in human brain is the thing that destroys it. And I have seen a lot of places that it says it's us who is stopping ourselves. And I feel it's damn true. Take deep breaths, drink water. You're interested in this chapter? Yes, I am. Just do this chapter. Other things, leave to the person you believe, the God. Fine? Happy? Be positive. Not to this way, I do to this myself. I just like coaxing myself. I pronounce the words sometimes bad. What I'm saying, I just remember. Well, just okay, fine. We are restarting again. Wait. Fine. So next is loss of biodiversity. Sadness stops us. I don't know why. Loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about the continuing losses. The biological wealth of our plant has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to the human activities. The colonization of the tropical Pacific Islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2,000 species of native birds. The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 74 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in the last 500 years. Some examples of recent extinctions include the dodo, Mauritius, quagga, Africa, Thalassia, Australia, Stilo, Sika, Russia, and the three subspecies Bali, Javan, and the Caspian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Careful analysis of records show that extinctions across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinctions is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learned that large-scale loss of a species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared on the scene. During a long period, greater than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. How is the 6th extinction presently in progress different from the previous episodes? The difference is in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1,000 times faster than in the pre-human activities times, and our activities are responsible for the faster rates. Because is warned that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. In general, loss of biodiversity in a region may lead to a decline in the plant production, lower resistance to environmental perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest, and the disease cycles.
इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन में डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन को लीड कर सकती है. लोअर्ड रेजिस्टेंस टू environmental perturbations such as drought and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycles. तो जब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इनके स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में ये बताया गया कि आखिर कितनी स्पीसीज थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, रेट्स कैसी बढ़ रही हैं, प्रीवियस ईयर से डिफरेंट क्या है, हमारे 5 एपिसोड्स और से ये 6 एपिसोड अलग कैसे है. तो उसका मेन रीज़न यही आ रहा है कि humans had led to more difficulty for the nature to survive and to exist well. So let's get through the explanation of all this. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें बताया गया एक होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन जो कि ड्यू टू नेचर होता है, मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ्स होता है और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है. तो फिलहाल अगर नेचुरल एक्सटिंक्शन और हमारे मास एक्सटिंक्शन की बात करें उससे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो अबाउट टॉकिंग द मास एक्सटिंक्शन आई कैन definitely give the best example, that's of dinosaurs due to catastrophe, because it's believed that due to the meteorites hit on the earth the dinosaurs disappeared. It was cause of natural extinction too. Well, so अर्थ का origin 4.5 million years ago हुआ था, ये हम सब जानते हैं. और जो नेशनल बर्ड होती है मॉरिशस की वो डोडो होती है, अब वो भी हमारी एक्सटिंक्ट हुई है इन द रिसेंट ईयर्स. तो बात इससे स्टार्ट होती है कि हमें ये तो नहीं पता अच्छे से कि कोई न्यू स्पीसीज ऐड हो रही है क्या अर्थ पे, लेकिन हमें ये अच्छे से पता है कि स्पीसीज लॉस्ट ज़रूर हो रही है. और जो बायोलॉजी डिक्लाइनिंग रैपिडली, और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे जो फिंगर पॉइंटिंग थिंग जो है, मतलब कि पॉइंटिंग थिंग मीन्स लाइक जिस पे हम लोग उंगली उठाकर कह सकते कि हाँ यही रिस्पॉन्सिबल है और वो उंगली हमारे तरफ आ रही है, मीन्स ह्यूमंस. बिकॉज द कोलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लीड. बस एक बार पैसिफिक आइलैंड को कोलोनाइज कर लिया था ह्यूमंस ने, और उन्होंने पता क्या किया, 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स के एक्सटिंक्शन के कारण बने. कौन? ह्यूमंस. 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स. IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि 784 स्पीसीज लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हुए हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं. और कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन में हमारे डोडो मॉरिशस का है कि जो डच पीपल हैं उन्होंने मॉरिशस की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया और हंटिंग की, उससे ही हमारे जो डोडो हैं वो एक्सटिंक्ट हुए. क्वागा जो ज़ैब्रा होता है एक तरह का, अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ. थाइलासीन एक टाइगर फॉक्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुआ. स्टेलर सी काउ रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे हमारा ड्यू टू ओवर हंटिंग स्टेलर सी काउ एक जो कि एक्वेटिक मैमल है वो एक्सटिंक्ट हुआ. एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर ये भी हमारे एक्सटिंक्ट हुए. तो जो लास्ट 20 ईयर्स है उनमें ही हमारे 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए. तो दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग थिंग दैट कि ये जो चल रहा है, तो हमें यहाँ पे मेन, अब देखो हम लोग यहाँ पे पॉलिटिशियन बन के तो बैठे नहीं है कि मैं मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से पॉलिटिशियन कैसे बोल रही हूँ कि हाँ ये हुआ ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है. भाई मैं कोई ह्यूमंस के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं की है मैंने. सो येस, मेन थिंग इज वी आर स्टडीइंग बायो. सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. थॉट्स इन द बुक. डोडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ? मॉरिशस, राइट. थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से. एंड
स्टेलर सी था रशिया से। वो 3 सब स्पीसीज क्या थी? बाली, जामुन एंड कैस्पियन। और एक और क्वेश्चन, क्वागा कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ? अफ्रीका, वाका वाका एलो वाका। सो अब एक्सटिंक्ट फ्रॉम अफ्रीका। और थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो एम्फीबियंस को ज़्यादा है, 32% एम्फीबियंस को, 31% जिम्नोस्पर्म को, 23% मैमल्स को, 12% बर्ड्स को थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। और एम्फीबियंस को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो वेटलैंड में रहते हैं तो उनका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ही ह्यूमन की नज़र जाएगी एंड दे विल ट्राई टू destroy it, because humans always look out for the maximum sources without doing any kind of human effort. They are just like that. Fifth episode of extinction is already over, and along with the fourth great revolution is extinction of the dinosaur, and the sixth extinction period is it's going with is this period would come fast because due to the rapid extinction, because 100 to 200,000 times faster than the previous extinction episode. So 6th episode is still going on, and Earth का origin था present 5th episode of extinction, 6th episode going on, rate of extinction 100 to 1000 times faster है. So this was all about the previous paragraphs we read. Now the next paragraph is like general laws of biodiversity may lead to decline in plant production, क्योंकि जब हमने समरी जो पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर कोई कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे लेस वेरिएबल होगा, हायर प्रोडक्शन होगा, एंड ऑल्सो वहाँ पे हायर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होगा. पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी को ही लॉस करें तो क्या होगा? तो देयर वुड बी डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, देयर वुड बी लेस रेजिस्टेंस टुवर्ड द इन्वायरमेंटल perturbations. Perturbations means disturbances such as drought, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycles. Cause of biodiversity loss. The extremity rates of species extinction rate the world is facing now are largely due to human activities. There are 4 major causes. The evil quartet is a sobric used to describe them. अब जब हम लोग बात कर ही रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, हमने ह्यूमन की तरफ उंगलियां तो बहुत उठा ली, पर प्रूफ तो करो हमने किया है. तो एनसीईआरटी कहती है क्यों नहीं, तो उसी को हमने कहा है ईविल क्वार्टेट, जो कि डिस्क्राइब करता है कि बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज़ क्या है. वो एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन जो भी वर्ल्ड फेस कर रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, उसके 4 मेजर कॉजेज को ही हमने ईविल क्वार्टेट कहा है. एंड आउट ऑफ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic examples of habitat loss came from the tropical rainforest, once covering more than 14% of the Earth's land surface. These rainforests now cover no more than 6%. Can you imagine the extent of destruction? The Amazon rainforest that earlier covered 14% of the earth is destructed to this extent that it doesn't cover even not more than 6%. Means 8% of the Amazon tropical rainforest that we know as such a wide 20% oxygen provided on the earth is destructed to this extent. Do humans really not care about their lives? Humans are unpredictable. The human brain is unpredictable. And I guess nothing is predictable. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1,000 more hectares of rainforest would have been lost. We are reading this chapter now, and they are saying, till we complete this chapter now, in the actual rainforest, 1,000 hectares
would get destroyed in that much time. The percentage the rainforest cover on earth is getting reduced by day. For what? For human comfort. The Amazon rainforest is so huge that it is called the lungs of the plant, and the humans are destroying their own lungs because they also live on the planet. If they are destroying the forest, they would just feel, for sure, they will face the bad consequences of their bad deeds. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soya beans for conversion to grasslands and for raising beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. So we were studying about the habitat loss and fragmentation. So first part is about the habitat loss. The humans are doing deforestation in the Amazon rainforest, which are the lungs of the plant, which earlier covered the 40% of the Earth's surface, but now only not cover no more than 6% of the Earth's surface. And also due to the pollution, the species are losing their habitat because the Amazon rainforest also harbors many species, but they are also losing their habitat. So first due to deforestation, another due to pollution, they are losing their habitat, and due to this leads to species extinction. And also fragmentation means dividing the large territories into small territories for some reason, like creating a road or any other public facility. They are doing fragmentation. So those species which require large territory, like lion, we can consider. And some animals with migratory habits are badly affected, and this also lead to their population decline. And we can know by this only that last 20 years we have lost 27 species and 15,500 species are at the risk of extinction. Second is overexploitation. Humans have always depended on nature for food and shelter. Still, they are never satisfied. But when need turns to greed, it leads to overexploitation of the natural resources. Many species extinctions in the last 500 years, Stiller's sea cow, passenger pigeon, were due to the overexploitation by humans. Presently, many marine fish and also the thing that habitat loss. Why are the Amazon forests being cut? They are cut for just cultivating the soya beans and for creating a grassland for beef cattle. मीन्स तुम सोयाबीन क्या किसी और लैंड पे नहीं उगा सकते, तो जो मुझे रेन फॉरेस्ट काटने की जरूरत पड़ रही है. And for beef cattle, mean the cattle which are cut and slashed and sold in like those butcher's market. I guess that's only the beef cattle. Sorry if I have any wrong knowledge. For that, for creating the grasslands for them, चरने की जगह, the rainforests are being cut. I really wonder. Means I know I'm not a politician, but I can't control myself giving a suggestion about that. The amount of space the garbage occupies on this earth, can that place not be used
for doing these kind of things? Because so manure can be provided as there can be many facilities. Maybe I'm not having much knowledge about these things, but I just feel like giving a solution for that. Ki by if you're clearing the forest, take time to clear the garbage because it would lead to a more productivity. पहली बात फॉरेस्ट बचेंगे, दूसरी बात गार्बेज क्लीन होने से हमारी अर्थ क्लीन होगी, और तीसरी बात तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी. सो व्हाई नॉट दिस वे? आई डोंट नो, maybe I don't know. Yeah, I know the tropical rainforest is much more favorable climate and all the things, and maybe the places of garbage dump may not be having those things. It would require more resources for these things on, but I guess grasslands to be created would be fine. Maybe, I don't know much, but I just suggested. Well, ignore that we are studying bio, not SSC. This occurs whenever we are studying bio or English, and this chapter is actually related to our life, related to humans, so it's good to link. I just hope I remember these points in my test, that soybean cultivation और grassland के लिए Amazon rainforest को काटा जाता था. So habitat loss and fragmentation is the one of the evil quartet. Now let's move on to the second. And the second is overexploitation. So obviously the human need turns into greed, and that's how overexploitation starts. So presently many marine fish population of the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. Marine fish की ज़्यादा हार्वेस्ट किया, ओवर हार्वेस्ट करने वाला फिशिंग ज़्यादा की जा रही है. वैसे ही स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पीजन भी हमारे एक्सटेंट हुए थे इन द लास्ट 500 years. So over exploitation is also a reason for the species extinction, means the loss of biodiversity. Third is alien species invasions. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. The Nile perch, introduced into Lake Victoria in East Africa, led eventually to the extinction of the ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake due to the inter-specific competition. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by the invasive weed species like the carrot grass Parthenium, lantana, and water hyacinth Eichhornia. The recent illegal introduction of the African catfish, Clarius caripinus, for aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. So the alien species may show commensalism. Example, Parthenium. The Parthenium releases a tranexamic acid which inhibit the growth of other plants. So obviously the other plants having negative, but it doesn't give any special benefit with the Parthenium. So obviously it's like that. Mutualism and obligate parasites show co-extinction. Alien species: plant, prickly pear cactus, Eichhornia, Parthenium, lantana. Parthenium is also called as Congress grass. Animal alien species: Nile perch and Clarius garipyrus. African catfish. So the evil quartet, we have seen 3 points. First was habitat loss and fragmentation, the second was overexploitation, and the third is alien species invasion. And the alien species invasion is the need ka pyar, whatever teacher said, obviously. So in alien species invasion we see Nile perch that was introduced in the Lake Victoria in East Africa. It lead to the extinction of more than 200 species of cichlid fish. And so
species, 200 species. Next is carrot grass, Parthenium lantana, and water hyacinth. And recent illegal introduction of African catfish clears gander is threat to indigenous catfishes. So these are the examples you have to remember. Now next and the last point of the evil quartet is co-extinction. How can co-extinction be a reason for loss of biodiversity? Okay, yes, if they are dependent on one another, so obviously if one is getting extinct, other would also get extinct. Loss of biodiversity will okay, just first read this one. When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in obligatory way also become extinct. Yeah. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Another example in this case of co-evolved plant-pollinator mutualism, where Yucca and Proniva, where extinction of one invariably leads to extinction of the other. Means mutualism and obligate parasites, so co-extinction, because दोनों साथ में रहते हैं. अगर एक भी मरा तो दूसरा भी मर जाएगा. It's a funny way of saying मर जाएगा. Our teachers. So what things we learned? We learned that biodiversity वाली जो point होती है, तो cause the biodiversity हमने evil quartet देखा. ईविल क्वार्टेट में हमने देखा कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी हो रही है वो हमारी ख़त्म हो रही है. अब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है तो उसके लॉस में हम देखा कि ख़त्म कैसे हो रही है. बायोडाइवर्सिटी आखिर ख़त्म कैसे हो रही है, तो वो हो रही है ह्यूमंस की वजह से. ह्यूमंस ने क्या किया, ईविल क्वार्टेट से हम समझा सकते हैं. उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे. तो उसमें जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि हमने बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो या तो उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड पॉइंट, हम लोग उन्हें ख़त्म कर रहे होंगे ज़्यादा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. मतलब कि पहले में हम लोग इनडायरेक्टली ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे में डायरेक्टली ख़त्म कर रहे हैं, तीसरे में हम लोग इनडायरेक्टली ख़त्म कर रहे हैं अपने फ़ायदे से, एलियन स्पीसीज इन्वेशन हो गया, और चौथे में को एक्सटिंक्शन से भी ख़त्म हो रहे हैं. तो को एक्सटिंक्शन आई गेस ह्यूमन रिलेटेड पॉइंट नहीं है अगर ह्यूमन एक स्पीसीज को ख़त्म ना करते. बाकी एलियन स्पीसीज इन्वेशन भी ह्यूमंस करवाते, कभी कभी खुद से हो जाता है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली ह्यूमंस ही करते हैं, और समटाइम्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सो ऑब्वियसली ह्यूमंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी से. एंड हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी. हमने ये भी देखा, तो हमारे नैरो यूटिलिटेरियन में हमने ये देख चुका था कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बजट और बोर्ड में हमने देखा था पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस की वजह से, और एथिकल अपने मोरल वैल्यूज की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. और कैसे कंजर्व करना चाहिए, तो इसमें इन सीटू में हमने देख लिया था कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. एंडेमिज्म जो शुरू करते हैं तो उनके लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम लोग बना देते हैं. 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी तक बन चुके हैं. उसमें इंडिया में वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा होते हैं. और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है एक साथ रखे जाए तो लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया कवर करते हैं, पर फिर भी बहुत सारी स्पीसीज़ को वो सहारा देते हैं. इंडियस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन में ऑलमोस्ट 30, और वो उनकी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की जाए तो ऑलमोस्ट 30% जो मास एक्सटेंशन होता है वो हमारा रुकने लगेगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा मास एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है. और हमारे इंडिया में जैसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 19 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं. एंड सेक्रेड ग्रोव्स हो गए, मतलब खासी जयंतर हिल्स हमारे मेघालय में होते हैं, जैसे कि उसके हमने अरावली हिल्स राजस्थान देखा. और वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा था कौन सा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. एंड सरगुजा चंदन बस्तर हमने मध्य प्रदेश में देखा था. मेघालय में लार्ज डिफ्यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ रेयर थ्रेटेंड प्लांट्स. एक्सेटिव हमने देखा कि गैमेट्स को प्रिजर्व करना, क्रायो प्रिजर्वेशन. बाकी जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, और बाकी प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए कल्चरल मेथड्स, टिश्यू कल्चर मेथड्स हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्स से करवा दी जाती है. और बाकी हमारे अर्थ समिट 1992 में हुआ था राइडो जनवरी में, जिसने हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की टॉपिक्स को डिस्कस किया. और 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था हमारे वर्ल्ड समिट में, जो कि हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में.
जिसमें हमारे 190 कंट्रीज़ ने कहा था कि हाँ वो कमिट करते हैं कि वो इस गोल को वो 2010 तक अचीव करेंगे, बाकी अचीव किया कि नहीं मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम अ माय स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, कि आखिर हम इस नेचर में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है इसके इकोसिस्टम में, क्यों चाहिए इतने स्पीसीज? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, साथ में पता करिए क्या। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। दिस इज अवर नथिंग, इट्स नॉट न्यूज़ चैनल गोइंग, it's not a news channel going on that we are going to take a break and we are going to meet up the break. See, this is a natural kind of break we need. Means like well, leave it out. Next topic: importance of biodiversity to the ecosystem. So should we do it in a way of a news channel? Let's try it on. So we are doing this for fun just because already 45 minutes of our study is going on. So as we are not going to take a break, so let's do a thing and study in a funny way. That's the way. I'm just trying it out with you guys. I know that nobody's watching it, so obviously I'm doing it for myself. Well, and no, well, I will be free. I don't know. Let's leave it off. The importance of the species diversity to the ecosystem. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is the question to all our public. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is the question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. For many decades, ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with lesser species. Because when we read the summary also, we have the point that the biodiversity having community will have less variable, more production, and also more resistance to the environmental perturbations, means the disturbances. So obviously, in some way, if the species diversity is more, it will lead to more stable. It is more stable than this place having less species. What exactly is stability for a biological community? So now let's explore this question. A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to the occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant to invasions by the alien species. So it's saying that if a community is stable, so it should not show too much variation. Means if any kind of environmental disturbances happens, then it's not like drought has happened, the place is severely affected by it. It should be able to maintain its rhythm, the natural rhythm, and that's what a high biodiversity region can show. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances that can be natural or man-made, and it must also be resistant to invasions by alien species. And if an alien species attacks at some time, it should have that much potential to deal with that too. And this property can be shown by the community having more species, because if there are less species, there would be less rhythm within them. So that's why the biological community having high species is more stable. Well, we have much more explanation for it, so let's move on. We don't know how these attributes are linked to the species richness in a community, but David Tillman's, what's the name of the person? David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity. That's all what we have concluded in the summary too, right? Because who did actually this experiment? It was done by David Tillman. David Tillman. This name is not a name to be made fun of. It's a name to be respected because it's what has told how high biodiversity leads to more stability within the ecosystem. Because if there's more biodiversity, it will lead to higher productivity.
higher productivity, and also more resistance to the alien species invasion or any kind of environmental perturbations. Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. Okay, I know that you all are selfish because you all are humans. I don't think any cow or buffalo would be watching my video. It's just a funny thing. So obviously, I was just saying that okay, if you don't take the species richness, if there is more species richness, there will be high biodiversity. It is good for this kind of stability. I know you won't be satisfied just by hearing this. Okay, we should maintain the high biodiversity, but I can also say that it's necessary for you too. You're human, so it helps you humans to also to survive. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? You would say, no, we even don't know which species is getting extinct because we're using our own move. Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? You would say, no, just a frog species lost, so what would be the major role of the frog? How is our quality of life affected? Say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth. They would say obviously no effect because we're living in our homes. Who cares about those ants? From 20,000 or be 15,000, we don't care. That's our attitude, humans' attitude toward this thing. But there are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, the river popper hypothesis. So I know you must may not be moved by the scientists or some kind of explorers or researchers like David Tillman's idea of maintaining the high biodiversity, because this is this generation is of too much cringe, I guess so. But no more comment about that. I don't know, my mind is so okay. Nothing more. Concentrating here. The river popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. He gave this analogy to tell about how these things, our species extinction, can also affect us. In an aeroplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivets, screws. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, proper function of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or the windows inside the plane. So let's understand the rivet popper hypothesis given by Paul Ehrlich. It's so interesting to learn about this. Are you willing to give time for it? Let's explore it in a better way. Should I explain it here? It would be more interesting maybe. Let's try, because actually the understanding thing I like it all things on, but still. So let's start learning about the Paul Ehrlich hypothesis. So when we talk about the Paul Ehrlich hypothesis, so what actually comes under this?
So, in Paul Ehrlich's hypothesis, it's like this. He gave the rivet Popper hypothesis. So, what is actually this rivet? What is this Popper hypothesis? So, let's know about it slowly. So, in this, if we take an aeroplane, so this is my aeroplane. I have drawn a well aeroplane beforehand, but I don't remember the structure now. It's looking more like a fish, but I have no. It's really looking like a fish. I can't help much with that. This Bernoulli's theorem also works here. I don't know. I'm remembering that, but not how to draw an aeroplane. Well, forget it. So this aeroplane is joined by screws, which are known as rivets. In his theory, whose theory? Paul Ehrlich's theory. So if you are sitting inside a seat in this tree, consider this whole aeroplane is an ecosystem. What is this aeroplane? This is an ecosystem. And when we are taking the screws which are placed here in the seat where I'm sitting, I took this screw with me, I took this screw with my home, I took this screw, oh, the handle came out, right? But it didn't affect me, right? Obviously I can still say I took this screw. So there is no effect to the plane safety. Obviously the plane will still land safely. But what if I move out of the door and get on this wing and take it screw from here. I pulled out these screws. These screws are the species. If I took the species from the seed, means this is part of ecosystem, because this whole plane is ecosystem. This is a part of ecosystem. This wing is a part of ecosystem. If I took the species from here, screws from here, species from this ecosystem are removed, this doesn't affect the plane safety. But if I took the screws from here, means the main something important part of ecosystem, this key species that contributes to ecosystem, if I took the screws from here, obviously this will affect the plane safety very much, and plane may crash too. So these species were so important for the ecosystem, but if we remove that, we are in danger, right? Now don't say that we have the parachute and we will move out of that. So this is what Paul Ehrlich thought it, because it depends कि अगर हमने पूरी कितने स्क्रूज निकाले, कितनी स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम से गायब हो रही हैं, अगर वो ज़्यादा गायब होंगे ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द प्लेन सेफ्टी. और अगर हमने किसी मेजर इकोसिस्टम के पार्ट से स्क्रूज निकाले, इट विल आल्सो अफेक्ट द प्लेन सेफ्टी. इसलिए कहा जाता है कि वी मस्ट कंजर्व द स्पीसीज. हमें अभी लगता है कि अगर एक फ्रॉग की स्पीसीज हमने हटा दी फॉरेस्ट से, कि हमने ये हम 20,000 स्पीसीज में से 15,000 स्पीसीज ऑफ अर्नसी बची, या वेस्टर्न घाट में से कोई एक फ्रॉग की स्पीसीज लॉस्ट हो गई, या कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम पे क्या फ़र्क पड़ता है? पर हम पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे धीरे धीरे ये गायब होती जाएंगी, पर लास्ट में जब मेजर स्पीसीज हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ह्यूमंस कांट सर्वाइव. अगर हमारे मेजर इकोसिस्टम से गायब होना स्टार्ट हो गई, वी कैन सर्वाइव. सो ऑब्वियसली वी मस्ट, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या चीज़ हमारे लिए मेजर रोल प्ले कर रही है, बिकॉज हर चीज़ बोल के हमारे लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती. सो इट्स अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, सो दैट वी मे नॉट लीड टू regret afterwards. So it was all about the river proper hypothesis. Now let's get back on the next topic. तो हमारे जो रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस मैं पॉल एरिच ने समझाया था. आई नो मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, पर जैसे हमारे पॉल एरिच ने हमारे रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस समझाया था, जो एयरप्लेन था उसमें हमारा इकोसिस्टम था, रिवेट और स्क्रूज जो थे हमारे स्पीसीज थे, और जो रिवेट और स्क्रूज जो कि विंग्स पे थे वो हमारे की स्टोन स्पीसीज थे. और इसी से बताया गया था कि स्पीसीज़ की हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है, भले ही हमें अभी उन्हें नोटिस करने से नकार दें. So this was all the importance of species diversity to the ecosystem, about in which we see the David Tillman's and the Paul Ehrlich's explanation. And after that we have seen loss of biodiversity. There is no
स्पीसीज के एक्सटेंशन के प्लेस देखे थे, इविल क्वार्टर देखा था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाई शुड बी कंजर्व एंड हाउ डू बी कंजर्व ये देखे थे, और हमने समरी भी देखी थी उसमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, आप लोग को पता है ना ये बात, नहीं तो अदरवाइज यू विल से दैट यू डोंट नो इवन व्हाट्स गोइंग ऑन। डोंट से सो बिकॉज आई एम गिविंग माय मोस्ट ऑफ info to explain you my friend, right? Because I know that here I am the only friend who is telling the things and who would understand things afterwards if I ever see this video. It's good that I'm doing this chapter because it is helping me gain confidence, at least in this chapter. It may take time, but maybe it should get me only the benefits, right? I'm not going to learn this chapter and give it to anybody else. Obviously, right? Whatever. Sometimes this kind of behavior, you must try to ignore. Okay, bye. Do the best for yourself so that you can later say that when I was alone, I was the one who get through all the tough times by myself, and I am in the position now just with my efforts. Because when we are in danger now, we sometimes try to seek help from others, but we can help ourselves too sometimes. I'm trying that thing only. Let's continue now. Sometimes it's good to motivate ourselves. Okay, fine. Patterns of biodiversity. Latitudinal gradients. The diversity of plants. Excuse my hand. Should I off that? Should I? Okay. It's already 8 in the evening, my dear friends. I just have 35 seconds to take the rest. It's already been 1 hour. We'll take some more time to study and complete this chapter of biodiversity and conservation. You all are doing fantastic, my guys. I love you all, my dear friends. Means I know I'm the only friend here watching myself. Obviously, it was for me only. Let's talk until I drink water. Yes, because I love to talk interesting. You know, I even think of the universe. You think that there's a black hole. So actually there's a thing I thought of myself. It's patent of myself. If there's a black hole, I think there must be a white hole too. And I named it also actually on some paper, but that paper is lost. I concluded very much things out of that. It's not too much, but yeah, because I feel if there's a black hole that attracts all the things inside it, and it's so mysterious that where all the things go inside it, so the things won't disappear so as much, or are they broke down completely inside it? If they're broken down completely inside it, they should be released like a human body system in somewhere place in the universe. I don't think that object consumed and its dissociated parts are somewhere in universe, because something that goes near the black holes gets attracted to it, because for cancelling that kind of attraction, because if black hole is too attractive, it must be a white hole in somewhere another place. It may be too far, it may be too near, but there must be something that acts as a white hole. It can be small too, it can be large too, or the elliptical orbits. And about the shape of the earth, seen from the universe actually looks like in a round shape, but I still wonder how we live in planes like this, how we don't fall off
Actually, there is a gravity at the core, at the epicenter. If the Earth is like round and there is a system, we are living in one of its sector. Why isn't the sector defined? I feel the shape of the Earth is not actually round. It's something different that's yet not visible. Oh my god, I'm so much like I just overthink like so I just thought of sometimes putting it in a correct way because see, every scientist is not a scientist initially, right? They make exemptions, so it's not bad to make exemptions about the things around you. But we shouldn't make assumptions about humans because humans are humans and you must respect them. So make assumptions about the things that scientists are also wanting to explore because I know that nobody would be watching my video of this and nobody would get these all ideas, but just preserving them for my own self. I would just like to patent it on my name or my friend. It's so good to like. Obviously, these other things are not gonna happen, but it's better to be in a other religion world to just explore the things around us because the things around us are not really so capturing. Yes, they are so captive. They carry so much with them. We don't know. You know what? I have even sometimes seen that the color we see around us are not actually the color. It's the kind of wavelength our eye selects for us that we perceive them. Like this is blue that I can perceive now. It may not be blue. I don't know. It may be wrong. It may not be. Things around us are. Sometimes I feel the whole world is delusional. Just I am the one who's been tested for any other kind of series. Anything can occur. By the way, you're not scientist. Why are you thinking all this? Okay, your break is over. The 5 minutes are over. So let's get back on the topic, my dear friend. Right? Why you get so lost in such a way? Fine, it's fine and good to be little open-minded with these things, but when we are studying, focus on it. Don't lose your concentration because focus and concentration are very necessary when you study. Because you know what, we should when we are no more talks because we have much more to talk. I know because in this era now, our mind is so we feel everything interesting in our world, in our environment, except the book that is just for it's not a word forward, but okay, for now. But the physics chemistry also now, when you get through it, you feel it interesting. The thing is that you have to give the time. But if mind has now that's too much craving of that, I don't know what kind of dopamine it's that. I have just heard it so many places. I don't get it at all. Because even when you know that you are more happy when you study and that also for long lasting, then why? Why are you running after such short lasting dopamine by using phone and all the things? I don't know. Humans can't understand themselves. They know the right things, still do the wrong things. Too much ironic, and I don't want to explore it all. It would take me years since and all of that. Okay, it's just me and me, so no worries. Let's continue. Patterns of biodiversity. Latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. For many groups of animals or plants, there are interesting patterns of diversity, the most well-known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles, with very few exceptions. Tropics latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degrees south. However, more species than temperate or polar areas. Colombia, located near the equator, already has nearly 1,400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree north has only 56 species.
India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1,200 species of birds. A forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equally in temperate region like the Midwest of the USA. The lasting tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates. Scientists estimate that in this rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. So by going through this paragraph means we are learning about the patterns of biodiversity. Means we know that biodiversity is there present on our earth, but how much, how, where is more and more like. So in latitudinally it is divided. So in the poles the biodiversity is less. That in tropicals it is more. So how much it is more, it's depicted here that when we move from the Columbia, which is near the tropics, how much is the temperature near so near the equator, Columbia is, so it has 1,400 species. But as we move away from the equator means like 23.5 degree north is like a tropical area. Till that 0 to 223 is the tropical area, and after that we have the temperate and the next areas. So the species get declined as we move away from the equator. So like India also lie in some kind of tropical area, much of its. So 1,200 species of birds India have, and the forest like Ecuador has 10 times as many species of vascular plants as forest taken in temperate region. Means the area doesn't matter, but if it's in a tropical area, area means the land area. The land area may be same at two places, but what actually matters is like how much of that area lies in tropical area, because the tropical area the land area lies more, so it would have more species. Like the equator and the temperate forest in Midwest of USA is compared here. So in Ecuador it has 10 times more than that forest of USA in Midwest, because of it lies in tropical region. And the Amazon forest, as we know, it lies in South America. So it has the greatest biodiversity on the earth. It has most species of invertebrates. There's 1,25,000. After that we have P means plants, then we have F means fishes, then we have M means mammals, and amphibians are equal, and then after reptiles, plants, invertebrates, plants, fishes, then birds are also there. So invertebrates per fe को बीमार, तो वी कैन यूज इट एज अ ट्रिक. इन्वर्टिब्रेट्स पर फे को बीमार. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अमेजोन फॉरेस्ट में है तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा है इन्वर्टिब्रेट्स पर फे को. ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स हो जाएगा, उसके हमारे पी से प्लांट्स हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे फिशेस पर बीमार फेंकना है हमें, तो बी से हो जाएगा बर्ड्स, फिर हो जाएंगे मैमल्स, फिर हो जाएंगे एम्फीबियंस, फिर हो जाएंगे रेप्टाइल्स. होते हैं एम और ए हमारे इक्वल होते हैं, क्योंकि माँ इक्वल होती है. माँ इक्वल होती है का मतलब क्या होगा, ठीक है, एम इज इक्वल टू ए, मैमल्स एम्फीबियंस इक्वल्स है 427. तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखा. अब देख रहे हैं वाई सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स इट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. आखिर ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या जादू मंतर है कि वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है. चलो वो भी पॉइंट एक्सप्लोर कर लेते हैं. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions are subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. तो इकोलॉजिस्ट और हमारे जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा है, प्रपोज किया बहुत सारे हाइपोथेसिस में, जिसमें से सम इम्पॉर्टेंट वंस आर स्पेसिएशन, जो कि कहती है कि ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है. अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन द पास्ट.
ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होते हैं हमारे रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, एंड दस हैड अ लॉन्ग एवरेजनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो हमारी जो स्पीसीज़ उन्हें ज़्यादा टाइम मिल पाता है खुद को डाइवर्सीफाई करने के लिए, पर हमारे जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर हमारे चेंजेस होते रहते हैं, तब स्पीसीज इतनी जल्दी खुद को डाइवर्सीफाई नहीं कर पाती, उन्हें उस टेम्परेचर तक से ही लड़ना पड़ता है पहले। और जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहते हैं अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड लोकल, क्योंकि हमें पता है ट्रॉपिकल में इक्वेटर से हमारे रीजन जो होता है उससे मतलब कि हमारे लाइट ज़्यादा आती है, सनरेज आती है, तो हमें जो इन्वायरमेंट है वो टेम्परेट के मुकाबले ज़्यादा कांस्टेंट रहता है, इसलिए लेस सीजनल होता है। सच कंस्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। और वो जो हमारे कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है वो हमारे प्रमोट करता है स्पेसिफिक नीश एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी भी हमारी बढ़ती है। greater species diversity, and there is more solar energy available in the tropics which contributes to the higher productivity. This in turn might contribute indirectly to the greater diversity। और हमारे कहते हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी भी ज़्यादा आती है, इस वजह से हमारे टॉपिक्स में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी पॉइंट हमने समरी में बहुत अच्छे से देखा है, राइट। स्पीशीज फुल्ली अडॉप्ट अगर हमारे जो टाइम अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो स्पीसीज फुल्ली अडॉप्ट करेंगी, फिर ओवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। का नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद डाइवर्सिफाई ज़्यादा अच्छे होती है, एवोल्यूशनरी टाइम जो होता है हमारा ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा मिल पाता है उन्हें। तो हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये रीज़न होती है, उस वजह से ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। पहला रीज़न हमारा क्या था कि वहाँ का जो हमारा एवोल्यूशनरी टाइम वो ज़्यादा होता है। सेकेंड हमारा रीज़न ये था कि वहाँ पे मोर कॉन्स्टेंट रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट होता है, और थर्ड ये था कि मोर सोलर एनर्जी। और बाकी हम लोग है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने पैटर्न्स और बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूड के हिसाब से देख लिया कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा होगा टेम्परेट से। और हम देखते हैं कि जो हमारे पैटर्न और बायोडाइवर्सिटी है हम उसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में कि कितना एरिया कितने स्पीसीज है उस हिसाब से भी समझा सकते हैं। तो कहते हैं ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो क्या थे, जर्मन के नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अभी तक हमने 3 नाम देख लिए, मतलब कि एक हो गया हमारा डेविड टिलमैन, एक हो गया हमारे पॉल एलरिच, और ये हो गया हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि जर्मन के थे। पॉल एलरिच का ये वो स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन के नेचुरलिस्ट थे, और डेविड टिलमैन जो थे हमारा उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट किया था। ऑब्जर्व इट विद इन इन्होंने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, साउथ अमेरिका के जंगलों में। ऑब्जर्व इट विद इन द रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, कि जैसे जैसे वो इस रीजन ऑफ एक्सप्लोर ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्पीसीज़ की जो रिचनेस है, मतलब स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। बट ओनली अप टू ए लिमिट, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be rectangular hyperbola. सबके लिए क्या बने, rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s is equals to log c plus z log a, where s is equal to species richness, a is equals to area, z is equals to slope of line, regression coefficient, and c is equals to y intercept. Ecologists have discovered that the value of z, means the slope of the line, lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plants in Britain, birds in California or mollusks in New York State. The slopes of the regression are amazingly similar. सब में जो regression coefficient है वो सेम ही आ रहा है, कितना 0.1 से लेकर 0.2 तक, ताकि चाहे वो प्लांट्स हो ब्रिटेन में, चाहे वो बर्ड्स हो कैलिफोर्निया की, चाहे वो मोलस्क हो न्यूयॉर्क स्टेट की। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर. Z values in the range into 0.6 to 1.2. For example, for frugivorous fruit-eating birds,
and mammoths in the tropical forest of different continents slope is found to be 1.15. What do steeper slopes mean in this context? अब आखिर क्या लगता है कि स्टीपर स्लोप जो इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है उनका? तो ग्राफ स्टीपर मतलब कि स्लोप का बढ़ना, तो z बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस हमारी बढ़ रही होगी। तो मतलब कि जैसे जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ स्टीपर होता जाएगा। स्लोप कम, z कम, स्पीसीज रिचनेस कम। 0.6 से 1.2 पूरे कॉन्टिनेंट में अगर एक्सप्लेन करते हैं जैसे फिगर फॉरेस्ट, और जो मेम्बर्स है ट्रॉपिकल फास्ट में उनका 1.15 तक, क्योंकि स्पीसीज रिचनेस हमारी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज को हमने देख ही लिया तो उस हिसाब से। तो हमारा z जो होता है स्लोप लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, और बाकी ग्राफ है स्पीसीज रिचनेस और एरिया जो कि हमारा हाइपरबोला के फॉर्म में होता है, लेकिन लॉगरिथम इसके देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, और लेकिन जो हमारा हाइपरबोला होता है वो हमारा s इज इक्वल टू c a पावर z, s इज इक्वल टू c a पावर z। और हमारा s क्या होता है, हमारा स्पीसीज रिचनेस, c होता है हमारा y इंटरसेप्ट, और a जो होता है एरिया, और z होता है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और लॉग स्केल पे हमारा रिलेशन कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। लेकिन बाकी हम लोग देखें कि हमारा ऐसे रिलेशन क्या है तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा है ना अभी, ये वीडियो अपने आप एंड ना हो जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन की कैपेसिटी इतनी है नहीं, 1 आवर 21 मिनट्स का हो जाता है। देखते हैं ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा पार्ट शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देंगे, इसलिए टेंशन मत लो। फाइन, लेट्स कंटिन्यू। Now the next topic is how many species are, ऊपर से मेरे खाने का टाइम हो गया actually it's 8, so I have to go to, so I have to do it fastly. Calm down baby, calm down. It's 8:20. I don't know why some things, छोटी छोटी बात पे कौन इतना, okay, calm down. How many species are there on earth and how many in India? तो हमारी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज हमारे अर्थ पे हैं और कितनी इंडिया में, पता है? नहीं बताना, मैं बताती हूँ ना, बच्चों जैसे बिहेव करती हूँ ना, सॉरी। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम दोनों हैं ना, बस ठीक है। मी एंड मी। IUCN 2004 total discovered species on Earth is more than 1.5 million। हाँ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, हमने कहाँ पे समरी में, कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था। अर्थ का नहीं तो लाइफ था। One second, I must confirm because these years are confusing little bit. We have to keep a check on them. Life originated on Earth. हमारी जो लाइफ है वो हमारी ऑरिजिनेट हुई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, पर अभी तक 1.5 मिलियन हमारी स्पीसीज डिस्कवर हो गई हैं और 6 मिलियन स्पीसीज हमारी डिस्कवर होने बाकी हैं। तो IUCN के अकॉर्डिंग 2004, IUCN कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसने 2004 में बताया कि टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑन अर्थ हमारे ग्रेटर देन 1.5 मिलियन हो चुका है। और रॉबर्ट मे ने ये एस्टिमेट किया था कि टोटल एस्टिमेटेड स्पीसीज ऑन अर्थ हमारी 7 मिलियन है। Since there are published records of all species discovered and name, we know how many species all have been recorded so far. Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species all have been recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species are there on Earth, क्योंकि हमें पता है कि जितनी रिकॉर्ड हो गई वो तो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, पर हमें ये एक्चुअली में नहीं पता कि कितनी एग्जिस्ट करती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम भगवान थोड़ी ना कि हमें पहले से भगवान ने लेके भेजा बेटा यहाँ पे ये स्पीसीज है जाकर डिस्कवर कर लो, नहीं ना, खुद से डिस्कवर करना है, टाइम लगता है, कभी सारी स्पीसीज डिस्कवर नहीं हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004, ये में भी इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आता है नहीं। Total number of plant and animal species is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered. पर हमें clearly idea नहीं है कि कितनी species अभी discovered होना बाकी हैं। Described estimates vary widely. Many of them are only educated guesses.
For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. तो ये कहा गया है कि हमारे जो टेम्परेट में स्पीसीज़ हैं वो ट्रॉपिकल एरिया से ज़्यादा फाउंड करी गई हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है। इसलिए हमारा ये अनुमान है कि हमने ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत सारी स्पीसीज़ डिस्कवर होने के लिए भी बची हुई हैं, बिकॉज ट्रॉपिकल के अभी बहुत सारी डिस्कवर नहीं हुई बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज पोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर आर इन ट्रॉपिक्स, biologists make a statistical comparison with temperate tropical species resistance of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to the other groups of animals and plants to come up with the gross estimate of total number of species on Earth. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative scientifically sound estimate made by Robert makes places the global species diversity at about 7 million. एक और हमारे साइंटिस्ट का नाम आता हुआ वो कौन है, हमारे रॉबर्ट मे। तो देखो एस्टिमेट करने को तो कोई कुछ भी बोले, जैसे कि अभी मैंने इतने सारे एग्जामिनेशंस किए था यूनिवर्स के बारे में, ऐसा कोई करता है? मैंने क्या क्या बोला था, ऐसा होता होगा? मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे लोगों ने कहा कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे हैं और अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन डिस्कवर हुए हैं। कितना अनबिलीवेबल लग रहा है। पर रॉबर्ट में एक बार थोड़ा दिमाग आया, उन्होंने सोचा कि नहीं इतनी तो नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा अभी हमने जितने ढूंढी है उससे थोड़ा ज़्यादा होंगी। तो उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज अभी अर्थ पे डिस्कवर होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। अब देखते कि लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड on the currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals. More than 70% अभी तक जितने रिकॉर्ड हुए हैं हमारे क्या animals. While plants including algae, fungi, bryophytes, genus, plants and angiosperms comprise no more than 22% of the total. वो 22% तक ही रहते हैं. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group. इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने जब समरी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ग्रेटर देन 70% हमारे को कहते हैं एनिमल्स होते हैं। उनमें एनिमल्स में भी हमारे जो 70% होते हैं वो हमारे होते हैं कौन, इंसेक्ट्स, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स इन द प्लांट्स 7 आर इंसेक्ट्स। Again, how do we explain this enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world is more than combined total species of the world's of the fishes, amphibians, reptiles and mammals। और ये भी लाइन हमने क्या कहता है, ये भी लाइन हमारे समरी में दी थी। जो हमारे ग्रुप, जो फंगाई का जो ग्रुप है उसकी पूरी की जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है, वो जितनी भी स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सारी वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी से ज़्यादा है कंबाइंड टोटल। ये समरी लाइन है। इन फिगर 13.1 द बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। तो बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज नंबर के साथ दर्शाई गई है, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और जो हमारा पहले इनवर्टिब्रेट्स का है उसमें इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कि हमें पता है 70% ऑफ एनिमल्स में भी 70% में इंसेक्ट्स ही हैं। 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट हैं। उसके बाद हमारे मॉलस्क हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है। तो एक जगह IMC से कुछ हुआ क्या, आई मार खाई अदर एनिमल ग्रुप्स बाकी हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारी फिशेस सबसे ज़्यादा बताई गई हैं। मीन्स परम होता है ना, उसमें परम में ए जो हमारा पहला होता है वो एम्फीबियन होता है, लेकिन उसमें दूसरे ए से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा एव्स, और फिर हो जाएगा रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर मैमल्स। तो सबसे ज़्यादा पाइसेस हो गई, फिर हमारी एव्स हो गई, एव्स के बाद फिर रेप्टाइल्स हो गई, फिर एम्फीबियंस हो जाएंगे और फिर मैमल्स हो जाएंगे। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारी एंजियो सबसे ज़्यादा है, फिर फंजाई, एंजियो सबसे ज़्यादा। हमने वैसे कंपेयर पहले किससे किया था, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, मैमल से किया था ना, तो ठीक है। ये तो इनवर्टिब्रेट्स है ना। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा, फिर फंगाई, फिर एल्गी और
फिर बाकी बाद में आते हैं लाइकेंस, मॉसेस, फर्न्स, एडीज। ठीक है, तो फिर हमें एनजीओ और फंगा फिर एल्गी याद रखना है। आंज फू आल अंगफुअल अंगफुअल इज द राइट। एंड बाकी हमने परम से वो याद कर दिया, और आई एम से तो हमारा है ही। ठीक है, इस ग्राफ को याद करने में तो ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। हमने देखा कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो हमने प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कही, बेचारे बैक्टीरिया। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. Biologists are not sure how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. मतलब कि आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर करना, ये जो टेक्सोनॉमिक मेथड होता है, ये हमारे माइक्रोबियल स्पीसीज के लिए सूटेबल नहीं है। एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लिबर्टी कंडीशन। कुछ तो स्पीसीज में नॉट कल्चरेबल भी है, मतलब कि पहला हमारा कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड से ही नहीं है, इन पे अप्लाई नहीं होगा, सूटेबल नहीं है। और ये दूसरी बात कल्चरेबल भी नहीं है। इफ़ यू सेट द बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डेंसिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो हम लोग एक्सेप्ट करें बायोकेमिकल या मॉलिकुलर क्राइटेरिया इन स्पीसीज़ को थोड़ा एक्सपेक्ट करने के लिए, तो इनके तो बहुत मिलियंस में रन कर देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं। माइक्रोब्स तो खुदते ही होते हैं ना, तो लोग माइक्रोब्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल या मॉलिकुलर मेथड यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत अंदाज़ा लगाने के लिए, पर स्टिल वो मिलियंस में रन कर जाएगी, तो इतना सूटेबल नहीं होता, इसलिए मेंशन नहीं किया जाता है बायोडाइवर्सिटी अबाउट द माइक्रोब्स और प्रोकैरियोट्स। Although India has only 2.4% of the world's land area, India का पूरे वर्ल्ड एरिया में सिर्फ 2.4% है। Its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. So interesting to know, right? कि बेचारा इंडिया, बेचारा नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। It will develop. It's developing country now. It will develop. But just the thing is that change in mindset, change in some rules, change in strictness, and change in the environment. These all things are needed. It's 8:30. After some goals, I finished it all. Okay, fine. Cool down. Pagin aayega na. India is maybe 2.4% of the world's land, yet its share in the global species diversity is impressive 8.1%. It is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. Nearly 45,000 species of plants and twice as many animals have been recorded from India. मीन्स हमारी जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ होती हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। कैसे 2.4 इंडिया का लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में, और फिर भी वो 8.1% हमारी बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करती है। और इसमें हमारे जो 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स मिले हैं, और उससे ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, और उससे भी डबल हमारे एनिमल्स देखने को मिले हैं फ्रॉम इंडिया। इन इंडिया हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। इफ यू सेट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स, यहाँ पे मेज का मतलब क्या हमारे रॉबर्ट में, अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट देख लिए, 4। कौन कौन, रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, उसका हमारा पॉल एलिस जिन्होंने रिबर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया था, डेविड टिलमैन जिन्होंने हमारी हाई बायोडाइवर्सिटी के जो फायदे होते हैं वो बताया था। ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तभी तक हमारे सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हमने रिकॉर्ड किए हैं सो फार। अप्लाइंग बिकॉज उन्होंने कहा 7 मिलियन होता है, 1.5 मिलियन मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब 22% अभी तक हमने ढूंढ चुके हैं। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, इफ वी इसमें देयर आर प्रॉब्ली मोर देन 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. और estimation का हमें पता चले कि 1 lakh plants और 3 lakh animals अभी species डिस्कवर होना बाकी है। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of a country? तो क्या पॉसिबल है हम लोग टोटली सब कुछ ढूंढ पाएँ? Maybe or maybe not. Consider the immense trained manpower, taxonomists and the time required to complete the job. कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। द सिचुएशन ऑफ इज मोर हेल्पलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। तो नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है ना, वो पहले ही जल रही है, मीन्स ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उससे ही पहले कि हम उन्हें ढूंढ पाएँ कम से कम उनकी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक दे, कम से कम कैटलॉग में कि लिस्ट बना सके जितनी बुक्स वहाँ पे थी। कितनी अच्छी लग रही है ना ये लाइन। पर अगर रियल एस्पेक्ट में सोचे ना, अगर ऐसा हो रहा है, यू विल नो हाउ बैड इट्स गिव्स अ बैड फीलिंग।
हम स्पीसीज़ को ढूंढ भी नहीं पा रहे, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं ड्यू टू ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स। हाँ, अब तो यहाँ हमारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but all the levels of biological organization ranging from macromolecules within cells to biomes. जो बायोस्फीयर है उसमें इमेंस डाइवर्सिटी है और हेट्रोजेनिटी है, सिर्फ स्पीसीज लेवल पर नहीं लेकिन हर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद बायोसेल्स टू बायोम्स। मतलब कि छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हमारी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अब वो छोटी चीज़ को हमने अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स कहे हैं और बड़ी चीज़ को बायोम कहे हैं। बायोम इज़ अ लार्ज इकोसिस्टम। तो इन हमारे बायोस्फीयर में बहुत इमेंस डाइवर्सिटी है जो कि स्पीसीज लेवल पे नहीं हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पूरी चैप्टर हमने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी का है। आखिर इस टर्म को देने वाले तो पता नहीं, पर फेमस करने वाले इंसान कौन थे? एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वर्ड को पॉपुलराइज कर दिया, वो था बायोडाइवर्सिटी, ताकि हम पूरी कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सके हर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। और हमारे वो लेवल्स कौन से होते हैं, तो ये भी हमने चीज़ देख ली थी कहाँ पर, समरी में, कि वो जेनेटिक लेवल पे देखते हैं, स्पीसीज लेवल पे देखते हैं और इकोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं। हम लोग लाइन पढ़े देख लेते हैं। तो लाइन ये थी कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट all levels of biological organization. Of particular importance is the diversity at genetic, species and ecosystem levels, and conservation efforts are aimed at protecting diversity at all these levels. ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक में, ये तीनों लेवल्स पे हमें कंजर्व करना है। The most important of them are genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. एक सिंगल स्पीसीज जो होता है हाई डाइवर्सिटी शो कर सकता है जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउवोल्फिया वोमिटेरिया growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. India has again gets sucking up. I don't know what is this anxiety attacks or what. It just troubles the inside. I don't know why it occurs. And I'm just thinking, and the only reason, it's just a small reason that what due to less storage this video ends at any point. And I'm facing that, it will end, and why I'm anxious about such a small thing. Understand. Even though I have a way out that I will make a short of it. Calm down. A single species might show high diversity at the genetic level. एक कोई सिंगल स्पीसीज भी होती है, जैसे कि हम अपनी स्पीसीज ह्यूमन स्पीसीज की बात करते हैं, वो हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। कि एक सिंगल स्पीसीज़ होती है, उसके भी डिफरेंट जीन्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे एक इंसान होती है, उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे जो होते हैं कि सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट raw wolfia vomitoria growing in different Himalayas might be in terms of potency and concentration of the active chemical respirin that the plant produces. तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया जा रहा है वॉल्फिया वोमिटेरिया द्वारा। एक रेसरपाइन हाइपरटेंशन की मेडिसिन है जो कि रेस्पिरिन होती है। तो उसके अंदर कितनी पोटेंसी है और कितनी कंसंट्रेशन है एक्टिव केमिकल रेस्पिरिन की, वो उस हिसाब से एक्ट करते हैं। और कहाँ पे ग्रो करते हैं? हमारे हिमालयन रेंजेस पे। तो एक ही स्पीसीज़ है पर वो अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करती है डिफरेंट, ठीक है। हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, तो मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी में उसके डिफरेंट टाइप्स के जीन्स भी मैटर करते हैं ह्यूमन्स के लिए। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। 2 लाख तक मेनली जाते हैं, डिफरेंट चैप्टर में लिखा है राइस के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं जेनेटिक्स के, और 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो।
Species diversity. The diversity of the species level, for example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. रीजन बेटर सेलिनिटी और साल्ट कंसनट्रेशन. एक सिंगल कम्युनिटी जो होती है उसकी डिफरेंट स्पीसीज होंगे. जैसे कि हम लोग एम्फीबियन की बात करें तो उसमें फ्रॉग को ले लें, उसकी ही बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट्स में कंपेयर टू ईस्टर्न घाट. तो एक स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात हो गई. जेनेटिक डाइवर्सिटी में जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन्स की बात हो गई. एक राइस हम लोग उगा रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं. स्पीसीज है इनमें स्पीसीज अलग हो सकती है. एम्फीबियन की बात की यहाँ पे. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands will overcome it. Definitely. I can, I will. You know what I'm talking about. At the ecosystem level, India, for instance, with its deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and the alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. एक सिंगल लैंडस्केप में डिफरेंट इकोसिस्टम का होना. और वैसे ही इंडिया एक हमारी लैंडस्केप बताई गई है जहाँ पे डेजर्ट, रेनफॉल, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स और एस्चुरीज, अल्पाइन मीडोज है, वो ज़्यादा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी दिखाते हैं. जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से ज़्यादा डेजर्ट, मैंग्रोव, कोरल ये सब है हमारे. तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी. इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स होना किसी एक सिंगल लैंडस्केप पे, दैट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एक सिंगल कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज का होना, दैट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी. एक सिंगल स्पीसीज में डिफरेंट जीन्स का होना, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट इज taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. बहुत millions of years लगे हैं एवोल्यूशन के ताकि ये रिच डाइवर्सिटी नेचर में हमें देखने को मिल सके. But we could lose all that wealth in less than 2 centuries, so the present rates of species losses continue. It's 8:40. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of the international concern. I need to overcome this. I will. To accumulate this rich diversity in nature. Biodiversity and its conservation are vital environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. Millions of years लगे हैं humans को इस अर्थ पर, humans पर नहीं, it has taken millions of years on this earth ताकि हमारे जो प्लांट की स्पीसीज है वो ग्रो कर सकें. पर हम इस पूरी जो बायोलॉजिकल वेल्थ को सिर्फ 2 सेंचुरीज में लूज़ कर सकते हैं. क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये जो डिक्लाइन हो रहा है स्पीसीज़ में, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अब एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बन गई फॉर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अब क्योंकि लोग अराउंड को भी रियलाइज़ हो रहा है कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की फॉर हमारे सर्वाइवल के लिए और वेलबींग ऑफ दिस प्लेनेट के लिए. नाउ जस्ट द इंट्रो पार्ट इज रिमेनिंग. यूरोप में 8 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, उसमें से स्कैंडिनेविया कहते हैं उसे. जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे की बात की गई है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, उसके लिए है. अब हमें बात करनी है किसकी, इंट्रो की. इफ एन एलियन फ्रॉम एन डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this plant never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fish, and nearly my battery is also less than 5%. Bro, all the things are acting at together. Means it's my time of eating my dinner, it's time my battery is low, and my anxiety that the video would end soon by itself due to less storage. I have to control it all. Okay, fine, just this intro, small intro is money. And nearly 20,000 species of orchids. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? Did such great diversity exist through Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? Would it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of the life? So this was all about
in the intro part it will just say if अगर कोई बाहर से एलियन आया देखा भाई इतने इंसान इतनी वैरायटी भाई साहब मार्स पे तो सब खा ही पड़ा है रेड रेड सब कुछ रेड रेड है वहाँ पे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी इतने कलर्स भाई भाई वो यही देख के भर जाएगा तो मैं तो यही रुकने वाला हूँ छोड़ो अर्थ को इन्वेट करना और हमें क्या हमें तो ह्यूमंस को आने देना चाहिए मार्स पे ताकि मार्स में इतना फल फूल बजाए they will think like this but they don't know that we are destroying the planet we are living on and we don't know what we'll do to Mars. Are we too much good to Mars? We don't know. Maybe that's the reason they are not allowing us to go to Mars. Aliens. IUCN International Union for Conservation of Nature Forests. Resources WWF Worldwide Fund. Symbol is Panda. UNEP United Nations Environmental Program. UNFCCC COP United Nations Environmental Program, UNEP United Nations Environmental Program, and UNFCCC United Nations Framework on Meeting Climatic Change COP Conference of Parties. So it's all right. HCFC substitute effect. Then is alpha, beta. What is alpha, beta? Alpha is the diversity within a community. Beta is diversity between two community, and gamma is diversity over a landscape. Okay. Kyoto Protocol is climate change, and Montreal Protocol is reduce ozone depleting substances. So these are the protocols: Kyoto Protocol and climate change for climate change, Montreal for reducing the ozone. And one more thing. Now let's discuss this question. Anoxia means no oxygen. Hypoxia means oxygen कम है. फिलहाल तो मुझे लग रहा है मेरे साथ वो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो रही है. I'm choking on inside. Why are there so many species? इतनी सारी species क्यों हैं? ताकि humans को support कर सकें. Evolution से हैं और कैसे हैं? Did such great diversity exist through Earth's history? Yeah, maybe they evolved. How does diversification come about by evolution? How and why is this diversity important to the biosphere? Because it helps in human survival, higher production, and all those points. Resistance to environment, and also one more point was there, no? Less variable means the resistance. Would it function any different if the diversity was much less? Means biodiversity must be higher because David Popper hypothesis by Paul Ellis says that it may not affect for some time but after long term it will. How do humans benefit from the diversity of life? Obviously we have to, because we are getting so many resources with narrow utilitarian and broad utilitarian. Narrow means economic benefits, broad utilitarian means pollination and photosynthesis, and ethical or economic benefits. Obviously we are benefiting from the free resources of the. This was all about this chapter. Finally this video didn't end it by itself due to less stories. I made it, I overcome it. I'm so thank you all thank you to me, thank you all. I don't know, but see, still I need to thank you guys. Thank you so much for being till the end with me. That's all it's about. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video, and hope it would get recorded full too. Bye bye. Good night.